वेलकम, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन। हम लोग सुनते हैं अभी लाइफ कोच। तो पहले हम गुरु गुरु शब्द सुनते थे, फिर कुछ लोग माइंड ट्रेनर कहते हैं। तो ये लाइफ कोच होता क्या है, और क्यों इतना पॉपुलर है? और लाइफ कोच भी तरह तरह के होते होंगे। सो वी हैव आवर ओन लाइफ कोच, अपने डॉक्टर देवांशी कपाड़िया जी हमारे साथ हैं। सो वी लर्न फ्रॉम हर अबाउट द रोल दैट अ लाइफ कोच प्लेज और कैन प्ले। तो देवांशी जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते अशोक जी, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बोलने से पहले मेरा ऐसा था, एक विचार था कि जब हम कोच की बात सुनते हैं ना, तो वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर थिंकिंग यार कोई गेम है, उसका जो कोच है वो प्लेयर्स को तैयार कर रहा है। सो डू यू सी लाइफ एज अ काइंड ऑफ अ गेम, जिसके लिए एज प्लेयर्स हम लोग खिलाड़ियों की तरह तैयार हो रहे हैं? तो लाइफ कोच, वहां से शब्द कुछ कनेक्शन रखता है क्या? जी ज़रूर रहता है अशोक जी, क्योंकि पिछले थोड़े सालों से हम रियलाइज कर रहे हैं कि एक ऐसा फेज था शायद 20-25 साल पहले, जब साइकोलॉजी और खुद का डेवलपमेंट, खुद का प्रोग्रेस बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत इम्पोर्टेंट आज भी है। पर पिछले कुछ डेकेड्स में, 2 या 3 डेकेड्स में, हमने रियलाइज किया है कि हम तो हमारा प्रोग्रेस तो इम्पोर्टेंट है, पर हम जिस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, वेदर वो वर्क सिस्टम है, वेदर वो फैमिली सिस्टम है, वेदर वो मैरिज सिस्टम है, वेदर वो पेरेंटिंग सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम को भी समझना जरूरी है। हम अपने आप को समझ ले, पर हमारी पोजीशन vis-a-vis दैट सिस्टम जब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, तब तक वो पूरी जो जो पूरी पजल है वो फिट नहीं बैठेगी। तो लाइफ कोच में कोच का मतलब ही ये है, जो ना सिर्फ आपको अपने आप से मिलाए या अपने आप से समझाए या अपनी अपनी खुद की टैलेंट, स्ट्रेंथ्स और रिसोर्सेस समझाए, पर आप जिस यूनिट से बिलोंग करते हैं, आप जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप जिस पैराडाइम से बिलोंग करते हैं, आप जिस सिस्टम से बिलोंग करते हैं, वो सिस्टम में आपको थ्राइव करने के लिए, आप सिस्टम में आपको अपलिफ्ट करने के लिए, वो सिस्टम में आपको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए भी आपकी सपोर्ट करे। तो coaching is vis-a-vis yourself, vis-a-vis your system, and your system vis-a-vis you. So that's how the whole word is derived. अच्छा, इसमें जब कोच की बात करते हैं तो भाई आप क्या फील कर रहे हो, या कहाँ आपको लग रहा है कि किस बात को लेके फ्रस्ट्रेशन वगैरह आप उनसे शेयर करते हैं, एंड देन यू फिगर आउट अ वे कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। यही बातें ना हम लोग पहले से सोचते थे कि भाई दोस्त जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि भाई अच्छा दोस्त है तो आगे जाने में। तो लाइफ कोच टर्म मैंने बचपन में नहीं सुनी थी ऐसे। अभी तो बहुत ज्यादा ये प्रचलित हो गई है। तो ऑफ कोर्स दोस्तों वाला काम अभी भी होता ही है, बट आई थिंक देर इज सम एडिशनल वैल्यू एडिशन टू एन एक्सपर्ट लाइफ कोच। तो वो वैल्यू एडिशन आपने काफी कुछ पढ़ के, सीख के, ट्रेनिंग से प्राप्त किया है। लेट अस गो टू द मोमेंट व्हेन सबसे पहले आपने यूज किया होगा कि डॉक्टर देवांशी कपाड़िया लाइफ कोच। तो उसमें थोड़ा ईगो वाली बात थी, उसमें क्या था? आई मीन हाउ इट 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 बिकेम अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। अशोक जी, बिकॉज क्या होता है ना, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर टर्म बहुत फेमस है और बहुत वाइडली यूज्ड है। जैसे आपको कोई लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, तो आप काउंसलर के पास चले जाओ, या आप किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, या आप थोड़े से डिफरेंट हो तो आप एक हीलर के पास, एक गुरु के पास, एक एक गाइड के पास चले जाओ। बट फिर ऐसा एक फेज आया कि कुछ गलत नहीं चल रहा है, कुछ चैलेंजेस नहीं है, पर इम्प्रूव कैसे करे, कि कैसे अपनी लाइफ को बेटर करे। तो वो मेरी एक स्टेज थी कि जैसे जो कर रही थी वो सही चल रहा था, वो ठीक चल रहा था, बट अब थोड़ा बेटर करना था। चैलेंजेस नहीं आ रहे थे, रिपीटेड चैलेंजेस नहीं आ रहे थे, बट एक थ्रेशोल्ड या एक प्लेटो हो गया था कि वहीं पे परफॉर्म कर रही थी, या उतना ही एडवांटेज मिल रहा था, या उतना ही फ्लरिश कर रही थी। तो तब ऐसा मौका आया, कि तब ऐसे सिचुएशन आई कि
किसी टीचर्स को, किसी थेरेपिस्ट को, किसी हीलर्स को पूछा कि आप मेरी कोचिंग करो कि मैं इससे बेटर कर सकूं। ये तो मैंने मेरी फुल कैपेसिटी में परफॉर्म कर लिया, पर यही मैं हूँ, यही मेरी कैपेसिटी है, अब इसको कैसे एनहांस करूँ। तो जब अपनी एनहांसमेंट के लिए कोचिंग मिली, वेज और मीन्स और मोडालिटी सिमिलर थी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी थी, पर जब मुझे वो कोचिंग मिली टू बी बेटर देन माय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्फ, एंड दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड दैट ओके, मेडिसिन, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एक है, पर एक ऐसा भी होता है जो आपको आपका बेटर वर्जन बनाता है। एंड व्हेन आई एक्सपीरियंस माय लाइफ एनहांसिंग थ्रू दैट same existing me is when I understood that no, this is a very powerful um, message. Even by the name life coach, a very strong or a powerful a message is conveyed, and that's how this name has its own meaning. एब्सोल्युटली। तो इसके बारे में थोड़ी और बातचीत करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इंडिया में था तो काउंसलर भी कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिए होते नहीं थे, एटलीस्ट मैं जहाँ था वहाँ तो नहीं थे। और अमेरिका में ये काउंसलर टर्म काफ़ी ज़्यादा रहती है यूनिवर्सिटी में। वो आप सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करना है उसके लिए भी जाके कंसल्ट करते हैं, बट उसका एक लिमिटेड रोल रहता है। जो बात हम अभी लाइफ कोच के रेफरेंस में कर रहे हैं उसमें और भी बड़ी बातें हैं। पर जैसे कि आपने कहा कि आप कैसे एनहांस करें, बहुत सारे लोग सर्वाइवल मोड में ही चलते चलते निकल जाते हैं, मतलब बाय बाय हो जाता है। ये वाली जो अवेयरनेस है कि आई कुड डू बेटर, आई कुड एक्सेल, एंड आई शुड पुट माय होल हार्ट एज वेल एज, अगर रिस्क लेना पड़े तो लेना चाहिए। तो ये कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं होता है। कैन यू से समथिंग अबाउट दिस? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग उनको पता होता है कि आई कैन डू बेटर लेकिन वो करेंगे नहीं? कुछ लोग उसके लिए जी जान लगा देंगे। सो व्हाट इज इट दैट क्रिएट्स द डिफरेंस? So, Ashokji, life coaching will have multiple aspects to it. So, it will have a spiritual component. So, you will get spiritual life coaching. It will have an emotional component. So, you'll get emotional life coaching. You'll have mental life coaching, and you'll also have physical life coaching. So, life coaching with this four spiritual, mental, emotional, and physical is that हर इंसान सेम है, पर ये चार सेक्शन में से कहीं ना कहीं उसकी चैलेंज आ रही है। कोई स्पिरिचुअली बिल्कुल समझ नहीं रहा होगा कि क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, वो सिर्फ लॉजिक से चले जा रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, क्यों वो लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और उससे फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। ये नहीं कि कहीं ना कहीं मैंने ग्रजेस पकड़ रखे हैं, मैंने किसी को फॉरगिवनेस नहीं की है, मेरे लाइफ में ग्रेटिट्यूड कम है। तो वैसे वैसे एग्जाम्पल में हमें उनकी स्पिरिचुअली लाइफ कोचिंग करनी है। जैसे कोई मेंटली लाइफ कोच है जिसका विल पावर वीक है, जो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, जो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, जो एक चीज में बैठ नहीं सकते, उनका कॉन्स्टेंटली माइंड इज जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। सो दीज पीपल विल रीड लाइफ कोचिंग एट द मेंटल लेवल। कुछ लोग इमोशनली होते, कुछ भी सेंसिटिव, थोड़ा सा बोल दिया तो मन में इतनी बड़ी बात हो गई, जैसे भर के रखा है, सप्रेस करके रखा है, ट्रॉमा पे ट्रॉमा, ट्रॉमा पे ट्रॉमा, हर चीज छोटी से छोटी मैं अंदर दबा के रख रहा हूँ। सो देन दीज पीपल विल नीड इमोशनल लाइफ कोचिंग, एंड सम पीपल विल नीड फिजिकल लाइफ कोचिंग की सब स्ट्रेंथ है पर फिजिकली मोटिवेटेड नहीं, अपनी बॉडी को पे बैक नहीं कर रहे, अपने बॉडी को एड्रेस नहीं कर रहे, अपनी बॉडी से टच में नहीं, अपनी बॉडी को नरिश नहीं कर रहे। So as a life coach, there are these four pillars which are very very important, and each client which will come to us will not have all these four pillars shaky. They might have one pillar shaky or the another pillar shaky. बहुत रेयरली ऐसा होगा कि चारों हिले हुए, देन वो लाइफ कोच नहीं, वो फिर एसओएस किसी के पास इमीडिएट हेल्प और लाइफ सेविंग के लिए जाएगा। बट generally life coach would want to consolidate these four aspects of your being by understanding which is the weaker one, and that's why life coaching has a very integral component to life. It's very close to life. It wants to bring you as close as optimal living as possible. तो अभी जो आपने बताया ना, मुझे लगता है मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे को यूरेका मोमेंट आ गया। अच्छा, ये वाली चीजें हैं जो लाइफ कोच जो है उसको एड्रेस करता है। तो मुझे लगता है ये जैसे आपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये जो चार पिलर्स बताए,
इसमें कई लोग अपने आप को देख सकते हैं, दे कैन आइडेंटिफाई कि हाँ यार, यहाँ तो मुझे प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्ली आई आल्सो नीड लाइफ कोच। पर उनको लगता है कि एक तो ईगो भी रहता है, कहता है आई विल फिगर आउट, या फिर उनको लगता है यार ये कुछ अलग पैसा वैसे खर्चा ज्यादा होएगा, उससे मेरे को अपने दोस्तों से ही बात कर लूंगा, वाइफ से बात करूंगा, हस्बैंड से बात कर लूंगी, वट एवर। सो टॉक टू मी अबाउट, और अगेन जैसे हर एक प्रोफेशन में अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, तो लाइफ कोच भी कई तरह के होते हैं। कई लोग इतना इन डेप्थ जानते नहीं है लाइफ के बारे में, बट वो टाइटल लगा देते हैं लाइफ कोच। तो इसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए क्या? व्हाट डू यू थिंक? Generally, life coach will only be equipped enough if they have had multiple exposure, that they have exposure in, like my exposure is into medicine, is into NLP, it's into constellations, it's into regression therapy, it's into clinical hypnosis. So generally life coach will not be a person who is concentrated on one therapy, on one modality or one practice. Life coach will generally have an overall feel of things. You know, they would have a professional degree with academia into a certain modality. Then they would have worked on another additional modality as a way of enhancing human behavior. So human resource, human psychology, behavioral therapy. So when a person comes from various components of human well-being, is only when, some people have done nutrition, some people have done a lot of in-depth studies into ayurveda, or some people have done very in-depth studies into meditation. So these are the people who have gone beyond the academia and also looked at the other, जैसे बोलते हैं, siddhas of life, or have looked at the other accomplishments of life, are the people who will be appropriately titled as life coaches. It's not like when you're only into a medicine practice or into a psychology practice. When you have looked at the bigger picture of life, you've trained yourself into the bigger picture of life, is then where this life coaching makes more sense, more relevant. Is there a specific degree, is there a specific university, is there a specific title which can be given? No, it's more a fluid title at the moment, but definitely it's more than just counseling and therapy and psychology. It's when you have a feel of the overall life, you know, when you have taken more than just one academia. तो अभी जैसे आपने 2-3 एग्जांपल्स दिए, उसमें जैसे इमोशनल्स की बात की आपने, मेंटल, और स्पेसिफिकली जिस तरह से आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो एक बात कही तो वो उसको लेके घूमता रहता है उनका माइंड, एंड देन देयर परफॉर्मेंस आल्सो सफर्स, बिकॉज़ वो फोकस नहीं रह पाते हैं, वो तो उनकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों। सो हाउ यू एड्रेस दैट, एंड इफ यू can share any example without giving the name of the lady or the gentleman whom you help, जिनको कि ऐसी सिचुएशन से उसको रिजॉल्व करने में आपने हेल्प की हो? So I'll state the standard relationship, which is very relatable. Even if you are not in that position, it's relatable. It's typically when a daughter-in-law will come and say that I'm facing challenges with the elder woman in the family, which is the mother-in-law, and I'm not able to adjust. So generally, the point will come where there is unequal distribution of power. One person is exerting more power, and another person is given lesser power. Now slowly we have to work with the person, that your mother-in-law is representing as a stronger human being, or as a persecutor, or somebody who's victimizing you at this point of time in life. But let's go back in life. Where was the first time you were bullied? Where was the first time you felt that a friend was overpowering you? Where was the first time, or where were those previous times when you felt that you are not in your power, and just to please a friend, or just to please somebody in the group, or just to keep the friendship going, or just to please somebody in the family, did you succumb to power? So when the person starts understanding that my mother-in-law is actually representing my own weakness, because there is a weakness existing in me, and then we take them through a series of a release of trauma, series of muscle release of trauma, nerves release of trauma,
a series of emotional catharsis, and that's when the person slowly loses the grip of that strong emotional charge on them. Then slowly, once the emotional charge of being victimized releases, then we slowly replace it with forgiveness, with gratitude. So generally, a life coach will take you through this journey of first realizing and understanding the root of the trauma, to slowly cathartizing and desensitizing you to the emotion of the trauma, and then giving you a resolution in the form of gratitude or forgiveness to complete the loop of the trauma in your energy space. So this is generally the journey which most of the clients have to trend, each in their own way. For some people, the trauma is too big and the beginning is too small. For some people, the beginning or the root cause is very big, and then life has just carried on. So this is the journey with which most of the clients have to be navigated, that ultimately the resolution has to be reached in the form of forgiveness, surrender, and gratitude, because that's where most of the resolution lies. तो ये फॉरगिवनेस, सरेंडर एंड ग्रेटिट्यूड की बात आपने की, तो सरेंडर में जो रेफरेंस है वो अल्टीमेट को सरेंडर करने की भी बात है, लेकिन आप अगर किसी लाइफ कोच के साथ काम करते हैं तो उनकी गाइडेंस के साथ आप एक सेंस ऑफ सरेंडर जरूरी है, क्योंकि वरना आप बीच में कहेंगे कि नहीं ये मैं तो खुद ही समझता हूँ, समझती हूँ, एंड कई लोग बीच में छोड़ देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, because they would start, they'll learn, they'll probably be convinced कि if I work with this life coach, it will help me. लेकिन I'm just thinking thinking loudly. What has been your take on this generally? Yeah, so generally, Ashokji, we sitting in the position of giving support will definitely have to not look it from the perspective that this person left or this person continued or this person needed more or this person needed less. In one session, when the person is in front of you, you can deliver so much and you can guide so much. Okay, at the end of the day, the person has to walk the talk. So you can give the talk, you can teach them how to walk, and ultimately they have to walk. So sometimes the client will continue from first to the last and be very diligent. That's also welcome. There will be some people who will come, then they'll take a break, then they'll come back again, then they'll take a break. So that's also a pattern which we see in so many people. Then there's somebody who will take everything in one session, disappear for a long time, come back after a long time and say, see, I didn't follow what you told me that time, so I'm still in that same problem, and please help me again. So from a position of being a life coach and a life awareness person, it's wrong to put people into any kind of judgment. We have to learn to surrender first, that this is their journey, this is how much they can digest at this point of time, this is how much they can allow themselves to be healed. And so acceptance and being in awareness that this is how much is present for the person at the moment helps our journey or our process to be more easier. अदरवाइज वील बी कॉट अप इन द लूप, इतने चले गए, इतने ज्वाइन हो गए, छोड़ के चले गए, इतने आ गए. सो as a life coach we have to keep our alignment that this is not our game, this is each one to their own receptivity, and then life moves on like that. Hmm. So, Devanshi, I'll quickly share something that I caught on your Facebook page. I don't know where it came from. What does your name mean according to Buddhism? Devanshi means kind heart. Devanshi is the sea, beautiful to watch but dangerous to mess with. She has a heart of gold, but it won't end well if you anger her. She has a fighting spirit. She's stronger than you would think because she has faced many challenges. ऐसा कुछ है. तो how much do you agree जो description यहाँ उन्होंने दिया था आप अपने? Yeah. So it's only after being in challenges for a long time that you start looking at them as your teachers. But when you start the journey of challenges, you feel, oh, I'm a victim and I've gone through so much and the world is so bad, and why am I born with so many problems, and why am I not born with golden spoon studded with diamonds? But overall, with the journey, then you slowly realize that, oh, this challenge taught me to be stronger. This challenge taught me to forgive. This challenge taught me to trust more. This challenge taught me to love unconditionally.
So a lot of challenges, Ashokji, health challenges, family challenges, economic challenges, financial challenges, academic challenges, and each challenge now has become a very beautiful teacher, because with all those challenges put together, today I have like a whole kitty of resources with me. So it's true that challenges came, it's true that the challenges were tough, but it's also true that the challenges have been blessing in disguise. So that's how we navigate each human being that comes into our space with that journey, that how each challenge can be converted into a beautiful teacher for yourself. So talking about challenges, and the challenge of distraction is very common for each one of us nowadays. वो इतना सारा स्मार्टफोन वगैरह हो गया, और जो आप पहले मेंटल लेवल पर बात करें थी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है. मतलब ऑलरेडी कोई बंदा ऐसा होता है उसका माइंड एक जगह टिकता नहीं है, वो इधर से उधर जंप करता रहता है. और अब तो क्या कैसे इसका सॉल्यूशन है? एंड मेनी टाइम्स पीपल फॉरगेट कि वो कहाँ जाना था, उनको करना क्या था, बिकॉज देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. तो कैसे डिटूर ले लेते हैं उसमें लाइफ, बिकॉज एवरी मोमेंट इज लाइफ ना. हम लोग भूल जाते हैं, हम सोचते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों. तो ये जनरली भी जो आपकी बात सुन रहे हैं उनको कुछ आप पॉइंटर्स दे सकती हैं, हाउ दे कैन हैंडल दिस. Sure, Ashokji. So there are certain things which most of my clients will have heard from me, and I would not want them to negotiate on this one, because this will become fundamentals of healthy living. One is that 30 minutes while you get up, while you are still in your subconscious space of mind in the morning, please refrain from technology. Use the traditional alarms. Don't use the phone alarms, because phone alarms generally will want us to go and touch the phone and start our phone system. First 30 minutes of morning waking up is when our brain is really in the best phase of manifestation. This is the time where everything is new. The old has been processed and digested and thrown out. The new is yet not set in. So we are in a very blank state of mind. So if first 30 minutes of getting up can be utilized for chanting, for creative visualization, for allowing positive thoughts, affirmations to come in, then that sets the day, that sets the week, that sets the month, and that sets the coming year of life into a very positive phase. So that's one very important suggestion that I give to most of the people. Second being, at least if not more, 10 to 12 minutes of very thoughtful breathing, wherein you are not breathing heavily, you are not breathing slowly, but you are just connected to your prana. Prana means breathing in and breathing out. Just 10 to 12 minutes of focused breathing anytime in the day, whether you've had bath, not had bath, morning, evening, night, midday, midnight, midnoon, doesn't matter. When you can give yourself 10 to 12 minutes of focused breathing, that itself is set your own autonomic nervous system into a parasympathetic mode. Parasympathetic mode is the healing mode of the body. We have so forgotten to go from the fight and flight mode into the healing mode, that just 10 to 12 minutes of just focused breathing. I'm not talking about meditation, I'm not talking about religion, I'm not talking about chanting, I'm not talking about any heavy duty work. Very simple. Breathing in and breathing out will bring us so much back in touch with our prana, that already a lot of life force will re-establish. That's point number 2. And point number 3, I suggest to everybody to do some kind of grounding. Grounding means going and walking on the grass, or going and connecting through the Padmasana sitting pose with the root chakra, or going and working with the trees, with the gardens, hugging the tree, touching the flowers, smelling the flowers. So if you can do some kind of grounding exercises, it's a de-stress. All the floating electron, protons, neutrons in the body, which are causing so much anxiety, so much nervousness, so much acidity, so much acid reflux in the body, so much of acid base imbalance in the body, all starts calming down. So whether you're the CEO of the company or working in the lowest rung, whether you're studying for PhD, or you are a first standard student, whether you are 90-year-old or you are 9-year-old, doesn't matter. If these three can become an integral part of our life, then automatically a lot of fight response goes down.
So 30 minutes of privileged consciousness in the morning, then 10 to 12 minutes of conscious breathing, and connecting to Mother Earth. Is These are the three things which are doable, acceptable across all races and caste and creed and religion and background. So definitely, Ashokji, I suggest this for everybody who comes from any faith or for any kind of problems in their life. I sincerely appreciate what you just shared. और किसको कौन सी बात कब लग जाए हमको पता नहीं होता है, बट आई थिंक दीज आर वैल्यूएबल सजेशन जो कि रिपीटेटिवली हम उसको एक्सपोज होते रहे तो ऐसा लगता है कि अपने लाइफ में उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो it'll make qualitative difference in individual's life as well as collective life for all of us on the planet. तो एक दो बातें जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं शेयर करने की, जैसे डॉक्टर होते हैं वो भी बीमार तो पड़ते ही है ना, तो कोई लाइफ कोच को भी जरूरत पड़ती है क्या कि कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो खुद से रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो मे बी स्पिरिचुअल डायमेंशंस में, एंड यू हैव ट्रैवल्ड वाइडली और काफी एनर्जी सेंटर्स के बारे में एक बार आपसे बात हो रही थी, तो फ्रीली जस्ट इन दिस कंटेक्स्ट ऐसी जगहें जो आपको लगा कि वहां जाके आपको सहूलियत हुई, दैट यू गॉट इन ट्यून टू योर ओन ट्रू सेल्फ, ऐसी जगहें, और जो जगहें आपको बहुत पसंद आई चाहे इंडिया में या, एंड यू हैव वाइडली ट्रेवल्ड, आई थिंक यू हैव टच्ड मेनी कंट्रीज. Yeah. So, Ashokji, my connection to water is very strong, and especially river water. So, I personally feel that the waters flowing from the glaciers into the river has phenomenal healing powers, the phenomenal healing capacity. So, whether I talk about my experience on the Nile, or whether I talk about my experience with the Ganga, or whether I talk about the rivers in Japan, every river, every waterfall has very beautiful, angelic, loving, pure, cleansing energy. So I really recommend to most of the people that whenever you all are traveling, going to oceans is wonderful, going to beaches is wonderful, but if you get an opportunity to go to glacier waters which flow into the rivers and then take a bath in that, that has a very very deep cleansing effect right from your mind to your subconscious mind. It has a lot of healing power. So my experiences with the river waters that I've visited in the various places of earth has been phenomenal. Secondly, I have lot of connection to jungles, and whenever I'm in the sanctity of the jungle and with wildlife there and natural habitation, nothing manicured, nothing really touching the human consciousness, that brings me back to a lot of connection to earth and nature. So that's very very special. And because I have in this incarnation chosen India as my karma bhumi. India has some beautiful religious places, more than the temples and the shrines and the sanctum sanctorum built there. Those are the energy centers, because there is this specific ley line of earth which is flowing, whether you is the natural Shiva temples, or it's the Ganesha temple, or it's the Shakti Peeth of the Devi temples. They, more than the temples and the sanctum sanctorum, the land there has this beautiful passing powerful energy meridian. So just by being in that land, just by being present, whether it's the Kedarnath in the north in the Himalayas, or whether it's Rishikesh, which is at the banks of the river Ganga, or whether it's in the south at the Rameshwaram, near the Rameshwaram temple. These are places where actually the earth is exudating such phenomenal healing powers. So the earth as a whole is very motherly and very nurturing, and especially when you visit these kind of places, it heals you. Like, we go through our anxiety, sometimes our pot is so full that we don't want to take more from our clients, or sometimes we are also going through a life crisis where a certain thing which had to manifest didn't manifest, and it kind of created disappointment. We lose our near and dear ones. Sometimes our clients don't succeed in the endeavors that they work with us for. So all these kind of accumulates on us also. But when we do this self healing and cleansing practices, it brings back our prana and our life force also. So nice, I think
This was very refreshing to hear from you, and it is inspiring कि वो नदी सागर में जाकर मिल जाती है, वो जो इमेज है वो हमारे लिए बहुत ही पावरफुल इमेज है। वो क्या है, व्यष्टि समष्टि, स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में कहें, क्या है, आत्मा का परमात्मा में मिलन, या फिर जो अल्टीमेट है उसके साथ मर्ज होने वाला जो एक बिंब है, वो ग्लेशियर्स के बहाव और उसके साथ, तो बहुत ही आनंद आया। और करके ना मैं समापन की तरफ ले जाते हुए, आपसे बातें करते हुए लगता है कि यू मस्ट बी वेरी इंटेंस। तो लाइटर मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में कभी क्लाइंट्स के साथ, या जैसे कुछ वर्कशॉप्स आपने किए, और कोई ऐसी बात जो वहाँ ठहाके लग गए हों कि ऐसा हो गया? I, as a basic tendency, I am a very loving, jovial, humorous kind of a person. So sometimes I'll just say a flat joke with a poker face, and then my people will start laughing. Basically, I feel humor, laugh, and being childlike is the way of life. So even with my life coaching, I don't engage into like very serious hardcore ways of dealing with things. The lighter we make it, the better. The happier we make it, the better. And they say that all the angels of love come and surround you when you are in a happy and a lighter mode, and that helps healing faster. Yeah, I mean, laughter is always a part of the therapy. It's always fun to laugh together, and to genuinely laugh from the heart, not just because we are laughing, but really allow the heart to open up and to laugh. तो पहले कॉलेज में थे, वो कोई जोक सुनाता था, फिर कोई हंसते नहीं थे तो अगली बार उसको कहते थे जोक सुनाए, तो हाथ ऊपर कर देना, पता लग जाएगा कि जोक खत्म हो गया, तो फिर हंस देंगे। तो अभी भी किसी को कहते हैं भाई जोक सुनाओ, तो कहते हैं याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। आपके साथ भी ऐसा होता है या आपको स्पॉन्टेनियसली याद आ सकता है? Yeah, like generally, like just yesterday, I told somebody that it's okay now. You are a Jhandu Bam. What do I do with you? That like, it's a very indirect way of telling somebody that you are like a pain, you know. So ये सब तो चलते रहता है. So I do tell my clients that come on, yaar, don't be a Jhandu Bam in somebody's life. Live, chill. So yeah, it's part of life. Laughter is important. लाफ्टर के साथ-साथ ये भी होता है कई बार, कहते हैं वो ये टाँग खींचना जिसे कहते हैं पुलिंग समबडीज़ लेग, तो वो भी चलता रहता है। और उसके लिए भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि सबका ह्यूमर ऐसा होना चाहिए कि वो उसको गाँठ बाँध के नहीं बैठ जाए। तो लास्ट क्वेश्चन, कई बार लोग कुछ बातों की गाँठ बाँध लेते हैं और वो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। दूसरों को दिखता है, उनको खुद को नहीं दिखता है लेकिन। तो इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? Solution ये है कि teaching them surrender in whichever way. So we tell them that when you and the other person has a tight knot in between, then create a third pole, which is the divine or which is the God. So surrender that knot to that divine and that God. You stop pulling it, because आप खींच रहे खींच रहे, वो knot tight हो रही है. आप वो knot छोड़ दो and let the third hand of the divine handle it. And still, if the situation stays as it is, then trust it as it being in the divine order. Because when you want to keep on pulling one end of the knot, you're going to just make the knot tighter and tighter. So we always introduce a divine element when there is a strong need to be stubborn or to hold on something very stubbornly for a certain thing. And acceptance, to teach acceptance to the person who is stubborn, becomes our roadmap. That from where the person starts, which is absolute stubbornness, to slowly taking them to a point of complete acceptance, that this is how the divine is at play, and I have to see the divine in this situation, and I have to come to an acceptance that this is also divinely guided, is where we look at a situation coming through. बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। और एक लाइफ कोच के सामने मैं एक लाइफ से रिलेटेड कविता के साथ इस बातचीत का समापन करूँ आपकी अनुमति लेके? Sure. अनुमति है? जी। Easy, तो please. कहता है कि कुछ और पढ़ो, कुछ और गढ़ो, रुकना मृत्यु है,
चलो बढ़ो, कुछ वेरी और गुड, पढ़ो। वेरी धन्यवाद। कुछ और पढ़ो, कुछ और गढ़ो, रुकना मृत्यु है, चलो बढ़ो। साहस आभूषण मान रहे, संकोच के पर्दे तान रहे। सीमा आरोपण किया बहुत, सीमित खुद को पहचान रहे। अब समय पढ़ो, नवगीत गढ़ो, गंतव्य बुलाए, अभी बढ़ो। वाओ, ब्यूटीफुल, कहता है ब्यूटीफुल। कि धन्यवाद। कहता है कि चिंतन की जो मधुशाला है, कर में सपनों का प्याला है। संभावित की मादकता से, संभावित की मादकता से, द इंटॉक्सिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, संभावित की मादकता से हर सांस सजी एक हाला है। साहस अपार अब आर पार होकर तैयार, क्यों रुके यार। कुछ और पढ़ो, पहचान गढ़ो, रुकना कैसा, लो अभी बढ़ो। वाओ, तो ये, लवली, कीप मूविंग, हाँ, तो कीप जीवन मूविंग। जीवन की ये कोचिंग जो है उसको कविता में पकड़ने की कोशिश थी। डॉक्टर देवांशी कपाड़िया जी ने लाइफ कोच के रोल के बारे में इतनी सहजता से इतनी गहरी बातें बता दी हैं, और उसमें से कई बातें हमारे साथ रहने वाली हैं। तो मैं आपको कृतज्ञता के साथ, जैसे आपने ग्रेटिट्यूड कहा था, उसके साथ मैं आपका थैंक यू, धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू अशोक जी, तो थैंक यू। इस तरह की बातचीत जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, उस को अपने साथ रखने का और अवसर हमें मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, और थैंक आप यू। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्ते।